वेलकम बैक टू गुड टू कॉर्टेक्स। आज हम करने वाले हैं प्रोविजन सर्विसेज विद गूगल क्लाउड मार्केट प्लेस। सो फर्स्ट टेक स्टार्ट लैब, देन हम क्लाउड कंसोल को इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करेंगे। क्लिक आई अंडरस्टैंड, अग्री, अग्री एंड कंटिन्यू। देन यहाँ से आपको ट्यूटोरियल लीव करना है। लैब पे वापस आने के बाद हम टास्क 1 पे आएंगे, जिसमें हमें सबसे पहले मार्केट प्लेस पर जाना होगा। Here it is, click on it. Now you have to search for NGINX. Search NGINX. This is it. Then to click on NGINX, Google click to deploy virtual machine tile. It will take time to look for it, so we will just search it. Copy this, paste it here, enter, and ये हमारे पास आ चुका है। हमें इस पे क्लिक करना है। Next, click get started, then click agree, then click deploy. Next, we have to enable this API as well. So take this in another tab, or you can just open the Google Cloud in another tab. Have to enter Infrastructure Manager API. यहाँ से इसे enable कर देना है। Then इधर आके हमें reload करना है। Next, we have to launch the NGINX tank. So first we have to choose the name. Let's choose this one. Now under the deployment service account, you have to select existing account and choose our compute engine default service account. It is already selected. Zone should be a central one A for me. आपके लिए जोन अलग हो सकता है, तो आपको उस पर ध्यान देना है। प्लीज चेक योर ओन लैब फॉर इट। नेक्स्ट, हमें कुछ और चीज़ें देखनी है कि अगर ये ऐसे हैं कि नहीं। अगर हैं तो हमें कुछ नहीं छेड़ना है। मशीन टाइप शुड बी टू स्मॉल। ये स्मॉल नहीं है तो हम इसे स्मॉल कर देंगे। नेक्स्ट, boot disk should be 20 GB and HTTP and HTTPS traffic should be allowed. Click on this one as well. Next, click deploy.
फिर कंप्लीट हो जाने के बाद हमें यहाँ वापस आना है, क्लिक चेक माई प्रोग्रेस, देन congratulations, the slab is now complete. If this video was helpful, give it a like and subscribe our channel for more such videos. Now you can just simply end this lab.